गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरोर्वैश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिञ्चिरादिकरुण्यावतीर्ण कलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वलरसं सभक्तिश्रियम् हरिपुरटसुन्दरधृतिः कदम्बसन्दीर्पितः सदा हृदये स्कन्दरस्फुरतु वसचीनन्दनः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमाववर्णं श्रीरावतारम् अपार संसार समग्रसेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम्। नौमिद्धते अभ्रवपुषतरितं वराय गुञ्जावतां सपरिपृच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजकवलवेत्रविशालवेणो लक्ष्मश्रियनिरुपदे पशुपङ्गुजाय भयामि राधा स्मरविप्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्रां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्ये चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद गौरी की जय, राधा माधव की जय। जय श्री गुरुदेव जी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री भागवत महापुराण की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। गप्पोचु जयति तेधिकम् जमना ब्रज
Hare
जत्ते सुजात चरणं बोरोहं स्तनेषु भीतासनै प्रियतहि मयि कर्कशेषु तेनाटविमतसि तद्गतेन किंसि कुरुपाधिभिर्भवति इति गोप्या प्रगयन्त प्रलपन्त सचित्रधा रुरुदो सुशरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविभूर्चौरि स्मयमानमुखाम्बुजो पीताम्बरधर साक्षात् मन्मथ पीताम्बरधर सर्गे साक्षात् मन्मथ। सर्वप्रथम परम आराध्य काम गुरुदेव नेत्रीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री गुरु महाराज जी किसी चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु नेत्रीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं नेत्रीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गौर गोविंद महाराज जी किसी चरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम लोग गोपी गीत के अंतर्गत आज 7वें दिन की कथा श्रवण करेंगे और 7वें नंबर श्लोक। आज गोपी गीत का अंतिम दिन है और ये 7 श्लोक हो पाया 7 दिन में, लेकिन गोपी गीत में 19 श्लोक है। हम लोग 7 श्लोकों का भाव श्रवण किया, थोड़ा थोड़ा आस्वादन किया। तो आज 7वें श्लोक में गोपियां क्या कह रही हैं? प्रणत देहिनां पापकर्षणं ऋणजरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफलार्पितं ते पदां भुजं गोपियां भगवान के चरणों में क्या गुण है, चरण में क्या लक्षण है, भगवान के चरण की महिमा क्या है, इस श्लोक में बता रहे हैं। सबसे पहले गोपियां तो भगवान का दर्शन करने के लिए कहा कि आप एक बार आपका मुखार बिंद का दर्शन दीजिए। जल रुहाननम चार दर्शया, ये प्यारे आपका सुंदर मुखार बिंद का दर्शन कराओ। लेकिन यहां क्या बता रहे हैं? यहां गोपी कहती हैं केवल आपका मुखार बिंद दर्शन करने से काम नहीं चलेगा। गोपियों ने सोचा कि मुखारविंद दर्शन करने के लिए तो दूर से दर्शन हो जाता है। श्री राधा गोविंद भगवान की, सचिनंदन गौर हरि की। ये मुखारविंद दर्शन करने के लिए भगवान का श्री मुख कमल दर्शन तो दूर से करके चले जाएंगे, लेकिन हमें तो उनको निकट पाना है।
हमें तो भगवान का स्पर्श करना है। अब कह रहे प्रभु आपका चरण का दर्शन हो गया, और चरण दर्शन करने के लिए पास में आना पड़ेगा। और केवल चरण दर्शन नहीं, आपका जो चरण है वो हमारे हृदय में धारण करो, यानी हमें स्पर्श करो, हमें स्पर्श सुख चाहिए। गोपियों के अंदर मांगने की जो मांग है, याचना, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। ये शिक्षा देते हैं कि साधन भजन करने वाले व्यक्ति को भजन की उत्कंठा दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना सत्संग सतवृत्ति, ये भजन की उत्कंठा नहीं है तो भजन में रस नहीं आएगा। आर्थी जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतस्व चातुर्विधा माम भजन्ते ये जना पदुपासते। गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। पहला नंबर आर्थी। आर्थी का मतलब मन में उत्कंठा हो, लालसा दिन प्रतिदिन बढ़े। कैसे हमारे भजन में भक्तिवंत ठाकुर जी ने बहुत सुंदर बताया कि हम इतना दिन तक 16 माला जाप किया, लेकिन आज हम 32 माला जाप करेंगे। आज एकादशी का दिन है, 1 लाख जाप करेंगे, 64 माला जाप करेंगे। तो दिन प्रतिदिन भजन में उत्साह होना चाहिए, ये उत्कंठा। आर्थी जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतस्व। तो पहले उत्कंठा नहीं है, सेवा में उत्कंठा नहीं है। हाँ, महाराज जी ने बताया रसोई बनाना है, मन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं है। अगर उत्साह नहीं होगा, उत्कंठा नहीं होगा, तो वो सेवा नहीं होगा, वो तो केवल ड्यूटी, ओनली ड्यूटी, कर्तव्य, धर्म नहीं है, क्योंकि उसमें रुचि नहीं है। हरिनाम करते समय उत्कंठा के साथ बड़े प्यार से, प्रेम से प्रभु का नाम लेना चाहिए। नहीं अभी इतनी माला बाकी है, फटाफट हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम खत्म कर दिया, ऐसा नहीं चाहिए। प्यार से बैठ करके एक एक नाम को आस्वादन के साथ, जैसा रोटी खाते हैं, पराठे खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, स्वाद लेके खाते हैं, चावा के खाते हैं। ऐसा नहीं है कि फटाफट खा के भाग जाते हैं। किसी बड़े रेस्टोरेंट में गए तो महाराज प्लेट भर के आए खाना, फर्स्ट क्लास आराम से बैठ करके आप खाते हैं, जैसे लोग आइसक्रीम खाते हैं। ऐसा नहीं है सारा मुंह में डाल दिया, कितना बढ़िया प्यार से उसको स्वाद लेता है। तो संसार की वस्तु स्वाद लेने के लिए हमें इतना समय लगते हैं, प्यार से खाते हैं, आस्वादन लेते हैं। तो भगवान के नाम में तो रस ही भरा पड़ा है, रस ही रस है। वो रस आस्वादन करने के लिए हमें कितना उत्कंठा होनी चाहिए, कितना भजन में मन लगना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं नाम महिमा में कि कृष्ण नाम में कितना रस है, कोई नहीं बता सकता, स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं बता सकता। तुंडे तान्य विनिव्रतिम तुंडावली लब्धये कर्ण कड़म विनि घटयते। वो कितना मधुरिमा है उस नाम के अंदर। नो जाने जनिता के वृत अमृत दय कृष्ण की वर्णित दय। ये 2 अक्षर में कितना
रस है, ये कोई नहीं बता सकता। हम लोग आस्वादन किया नहीं, इसलिए हम उसका रस हमको पता नहीं है। भजन में रस है। शंकर जी देखो, दुनियादारी छोड़ करके कहां पर्वत के ऊपर बैठकर, हिमालय में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां बाबा ध्यान में बैठा हुआ है। क्या रस मिलता है? मिलता है कुछ? और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, युग युगांतर, कल्पा कल्पांतर, कितना मनमंत्र बीत जाते हैं भगवान के ध्यान समाधि में, नाम रस में। बाबा मत्त उन्मत्त प्रमत्त, मन मुग्ध होकर के, भाव में खो करके, डूब करके मस्त आनंद लेता है, क्योंकि नाम में रस है। और हम लोग अकेले तो रह नहीं सकते। पहले फिर भी लोग लेते थे, लेकिन आजकल नहीं रह पाए। अगर किसी को कमरे के अंदर बंद कर दो तो कहेगा हमें मोबाइल चाहिए, नहीं तो न्यूज़पेपर चाहिए, नहीं तो कुछ किताब चाहिए। आजकल तो इंटरनेट के युग है महाराज, नेट के बिना तो लोग तो चल ही नहीं सकता। इंटरनेट चाहिए, मोबाइल चाहिए। पहले केवल मोबाइल होता था, लेकिन आजकल स्मार्टफोन, स्मार्ट आदमी भले स्मार्ट हो ना हो, लेकिन सबकी जेब में स्मार्टफोन। आदमी स्मार्ट हो ना हो, मोबाइल चाहिए। देखो मुस्कुराहट, आज हम हर एक व्यक्ति के जेब में, हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है कि नहीं? सबके हाथ में है। जब से मोबाइल आया, हम ये नहीं कह रहे कि खराब चीज है, लेकिन इतना दीवाना मत बनो कि ठाकुर जी को भूल जाओ, हरिनाम करना भूल जाओ, कोई ग्रंथ अध्ययन करना भूल जाओ, साधु संत की सेवा भूल जाओ। इतना दीवाना मत बनो। बच्चों से बात करने की फुर्सत ना मिले, पत्नी से ढंग से बात करने का टाइम ना मिले, माता पिता को राम राम करने का समय ना मिले, ऐसे दीवाना मत बनो। माता जी बुला रही है, बेटा मोबाइल में पड़े हुए हैं, हाँ ठीक है आ रहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज हमारा विज्ञान इतना उन्नत हो गया, क्या नहीं हमारे हाथ में सब कुछ है। आप इतने छोटे से मोबाइल के अंदर दुनिया भर की बात सुन सकते हैं। हाथ में तो मोबाइल है, लेकिन हम जब से हमारे हाथ में मोबाइल आ गया, तब से हमारे मुख से स्माइल खत्म हो गया। स्माइल है कहां है? फोटो के ऊपर कहते हैं, फोटो खींचने वाला प्लीज स्माइल, तो हर व्यक्ति तो हमारे फोटो खींचते समय स्माइल करता है। तस्वीर में तो हर कोई अच्छा दिखने लगता है, लेकिन असलियत में दुखी होता है। केवल सेल्फी लेते समय स्माइल है और बाकी समय दुखी। ऐसा नहीं, इसलिए नहीं होता है कि हम कोई भी काम करते हैं मन लगा कर नहीं करते। उत्कंठा नहीं है, उत्साह नहीं है, निरुत्साहित है, पता नहीं है जीवन में हम कितना क्या खो दिया है, क्या हमको मिला नहीं है। अरे क्या नहीं मिला, बड़े ध्यान से सुनना। ये दुर्लभ मानव देव देनाम क्षणम अंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन में वैकुंठ प्रिय दर्शन, बड़े भाग मानस तन पावा शूर दुर्लभ सब सदगंत में गावा। क्या नहीं दिया भगवान? सुंदर मनुष्य शरीर दिया, और क्या चाहिए? भजन करो, इतना कीमती शरीर है। ये शरीर इतना दुर्लभ होते हुए भी क्षण भंगुर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भजन करना था अभी करो, इसी वक्त करो, कल कर सो आज करो, आज कर सो आप, पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को खिले ना खिले, मलयाचल की सुंदर हवा चले ना चले, कलिकाल कुटा लिए फिरते हैं, तन नम्र से झिले ना झिले, अरे रसना तू रट ले कृष्णा नाम, अंत समय पे तू हिले ना हिले। कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि बुढ़ापा आएगी तब जाकर भजन करोगे।
अब ये हाथ चल सकते हैं, आंख देख सकती हैं, मुंह बोल सकते हैं, अभी से भगवान का भजन करो। लेकिन कैसे करना? बड़े उत्कंठा के साथ, आरती और जिज्ञासु। साधु संत आ जाए तो एक ही प्रश्न करो, महाराज ठाकुर जी से प्रेम कैसे होंगे? ये मत पूछो बेटी की शादी कब होगी, बेटा परेशान है, ये तो अपना होता है। और ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी बनो भगवान की भक्ति में मन लग जाए, संतों की सेवा में, जिज्ञासा। और अर्थार्थी का मतलब है कि अर्थ पाने की इच्छा होए, अर्थ धन कामाओ, लेकिन वो धन भगवान की सेवा कर रहा हो, ना तो केवल अपने शरीर की पूर्ति के लिए। ध्रुव महाराज जी धन पाने के लिए गए जंगल में, लेकिन जैसे भगवत दर्शन हुआ छोड़ दिया। अर्थार्थी में कौन पाया? ध्रुव महाराज जी। ज्ञानी में कौन? चारों कुमार। जिज्ञासु में कौन है? परीक्षित महाराज। और आर्थी में, उत्कंठा में कौन है? गजराज। हे गोविंद, गोविंद भगवान को पुकारे, राख शरणम, हे गोविंद मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी शरण में। जब गजराज पानी में डूब रहा था, भगवान को बुलाया तो भगवान ने इतना जल्दी में पा रहे थे प्रसाद, जैसे गजराज हे गोविंद बुलाया तो ठाकुर जी थाली छोड़ करके हाथ धोए बिना दौड़ पड़े। माता लक्ष्मी हाथ पकड़ के, कहां जा रहे हैं इतने जल्दी में, कम से कम खा के जाओ। बोलने का समय नहीं कि मैं हाथी के पास जा रहा हूं, हाथी को बचाने के लिए। भगवान जी इतने जल्दी में थे, कितने जल्दी में, हाथ पकड़ कर कहे कमला, कमला कौन है? लक्ष्मी। हाथ पकड़ कर कहे कमला, कहां जातो है ब्रजराज, हाँ वैकुंठ में थी हाथी के पास। ये नहीं बोल पाए, कहा हाँ वैकुंठ में, कहा हाँ, और हाथी को उद्धार करके कहा थी हाथी के पास जा रहा। इतने जल्दी में तो हमारे अंदर ऐसी उत्कंठा हो, गजराज उत्कंठा से भगवान को प्राप्त किया, तो कुछ भी करो उत्कंठा, जैसे ब्रज की गोपी उत्कंठा के साथ नित्य नवाय आस्वादन कर रहे हैं। तो अब गोपी भगवान के चरणों में क्या गुण है, क्या महिमा है, इस श्लोक में बखान कर रहे हैं। So for the past 6 years, with great fortune, we are able to hear this Gopi Geet. We are hearing up till now, we have heard the 6 shlokas. Although there are 19 shlokas in the Gopi Geet, and we have been able to finish today. We will finish the 7th shloka. That also, whatever we have heard on these days, I am just speaking brief because the time is short. There are so many things to speak, so it is not fully justified to the beautiful lessons, teachings in these slokas, but we have touched all these topics a little briefly. So today we will discuss the 7th shloka. What is the 7th shloka? This 7th shloka is yesterday we heard that how they are asking, they are praying to the Lord that please give us the darshan of your lotus feet. Of your lotus face, because the lotus face is so beautiful. Charu darshana. He's saying that give us the darshan of your beautiful face. We want to have darshan of your face. But here they are praying that please give us the darshan of your feet. Why? The gopis are very clever. They are very clever. When they are praying, with every shlok you can see their enthusiasm and their desires are increasing day by day, moment by moment. They are chanting the shlokas. Their desires is increasing. In the first shlok they spoke. Before this shlok they spoke that we want to have darshan of your lotus face. But then they started thinking that you can have darshan of the lotus face from anyone. Suppose somebody is coming from a distance, you can recognize that such a person is coming. From a distance you can have the darshan, then you can see that such a person coming. The lotus face means that you can have association of that person, not from a long distance. If you just want to have darshan of his face. But now they are praying, you want to have darshan of your feet, of your lotus feet. Why? Because face you can see from a distance, but the feet you cannot see from a distance. You have to go near. And then they are thinking
No, we don't only want that He should just give us darshan of His lotus feet, we also want the touch of His feet. That's why they're praying, we also want His touch. So they're saying that not only we want that you give us darshan of the lotus feet, but also we want that put your lotus feet on our chest. This is their desire. So he described that this is what they are teaching by this prayers. By this prayer they are teaching us that when you are performing your sadhana bhajan, your greed should increase more and more every day. Your sadhana bhajan, you should be all the time. You should be in anxiety. How to chant more and more. How to serve the Lord more and more. Whatever services I can do better and better. This should be the enthusiasm. Krishna is saying in Bhagavad Gita that how there are 4 types of people who come and perform bhajan to me. So one of them is Aarti. Aarti means somebody who is in distress. Somebody who is in distress, he comes to the Lord and he comes in distress, he prays that please solve these problems, solve whatever problems I have. But we should have this mood that today I have chanted 16 rounds. I have been chanting 16 rounds for so long time. Now I want to increase my rounds. On Ekadashi day I will chant more. I will chant 1 lakh. On other days I will start chanting more. This should be our desire. Our enthusiasm should be there. Without enthusiasm, without desire to perform sadhana bhajan, we will not have any enthusiasm to increase our sadhana. Otherwise, you will be able to, if you don't have, why this is happening to us? Because we haven't really tasted the nectar in the Lord's names. We haven't yet tasted. Why we haven't tasted this nectar? Because whatever we are doing half-heartedly. Because we are doing half-heartedly, so we are not getting any rus. We are not getting any taste from this. And because of this, our sadhana bhajan is decreasing day by day by day. But see the gopis, their sadhana bhajan is increasing moment by moment. They are speaking, one prayer they speak, then they correct themselves. Bigger desire, higher desire, even better desire. How to become closer and closer to Krishna, how to serve Him better and better, in a more close manner, how to serve Him more and more. This is the desire, this is the way we should serve. What is Rupa Goswami saying? Rupa Goswami is saying that you do not know how much rus, how much nectar is there in these 2 syllables, Krishna. In just these 2 syllables, he's saying you do not understand how much rus, how much nectar is there. He's saying to taste this nectar, 2 ears are not enough. 1 tongue is not enough to chant these his names. I want thousands of tongues and I want thousands of ears to hear these nectarian names. So this is a person who has realized the sweetness in these syllables, Krish and Na. This is his realization, this is his desire. So we should also be trying to absorb ourselves in our sadhana bhajan, then we will see that our desires also will keep increasing, just like the gopis. Not that, what is our aim when we are chanting? Our aim is how to finish the rounds. But if this is your aim, that how to finish the rounds, there is no taste, you will never get any taste. When you are going to a restaurant, you go to a very expensive restaurant and you offer some you order some very expensive sweet dish or something, you offer a nice cake and all. How do you eat it? Do you eat it, all that pastry or cake, whatever, do you take it in one gulp? No, you take it spoon by spoon, you put it in your mouth and you relish. Each and every morsel you relish. Each and every mouthful you relish. Similarly, when you chant the holy names, you should try to hear each and every single name that you are chanting. Try to enjoy chanting. Not that just the aim of if your aim is of chanting the rounds, how to finish the rounds, how will you be able to relish? Even if the most expensive of restaurants you go and most expensive of dishes you order, and if you just gulp it down, if your aim is how to finish this meal, you will not be able to enjoy this meal. Although the tastiest of the dishes, but if you sit down peacefully and if you enjoy peacefully, relish it mouthful by mouthful, then you will be able to enjoy it. Similarly, when you sit down to chant, that time we should enjoy these names. We should try to find the nectar in these names. All you have to do is absorb ourselves in chanting, taking our mind away from everything else. Try to absorb for that, whatever time you chant, maybe half an hour, 1 hour, 2 hours, 3 hours, whatever time you chant, at least in that time, forget about everything else. Just give that time totally exclusively to the chanting, and that totally exclusively to the services that you are performing. If you start performing some services that are also half-minded, and your mind is somewhere else and you're serving the deities there, you will not be able to fulfill whatever desires you have in the mind, neither will you be able to serve the Lord properly.
So whatever you are doing, do it with full absorption, do it with enthusiasm. And how Shankarji, by Shankarji's example, what is Shankarji doing? Shankarji, he is residing up in the Himalayas with just a deer skin or a lion skin to sit on and a deer skin to wear on his waist, and that's all he has. And we hear that for so long time, how long time? He's just sitting and absorbing himself, meditating on the Lord and on his names, he's chanting his names. And how long? We hear that for yugas and yugas, for manvantar and manvantar, means thousands and thousands of years he's just meditating on the Lord, on his names, chanting his names. This is an example of how who is getting some taste, who is getting some relishment, who is getting some nectar from the Lord, his names, how he can spend his time so easily, thousands and thousands of years. But today, what to speak about, taking the example of Shankarji, that go and reside in some remote corner in some place, even what to speak about remote mountain or some remote place, even tell somebody to go and lock yourself in a room. That also is very difficult for a person to lock himself in the room. He will say, oh, I have to stay in the room for 4 hours, 5 hours, I cannot stay alone. Please give me internet, please give me Wi-Fi, please give me computer, please give me phone. And he said, and nowadays, it is not that somebody requires just an ordinary phone. Everybody requires a smartphone. You are smart, you are not smart, that is immaterial. But today, your phone is smart. Everybody has a smartphone in their pockets. Everybody has a smartphone. And with the smartphones, what are they doing? Day and night, they're absorbed in these phones. Day and absorbed. This is the medium by which they are collecting information from all over the world. They are collecting, and because they are collecting information from all over the world, so much useless trash is coming through this that you spend so much time on the computer, on these phones and all, that actually where your mind should be absorbed, you have forgotten that. That your mind is becoming, you can concentrate lesser and lesser and lesser every day on the real subject matters, on the real places where you will get the nectar, and our mind is becoming more and more and more absorbed in the phones, in the computers, etc. And what is happening as a result of all this? People have even forgotten how to speak to their wives. They are living, they are sharing the same house, but they have forgotten how to even greet their wives, their husbands, their children, their mother, their parents. They have forgotten to associate with each other. Nowadays, it's become a fashion. Suppose it is a two-storied house. Nowadays, the mother is sending a message to the son. Oh son, can you please come and have dinner? And the son is saying that I'll come within half an hour. And they're in the same home. They're in the same home. This is the condition. Not even able to speak to each other properly. And you have to speak to somebody, that also through phones, through computers, through internet. Science has progressed in so many ways that even such a small phone has so many informations. It can give us so much information. The smartphone is there, but smile is not there. Smartphone has come to us, but the smile has gone off. We are only smiling when we are taking these selfies. Or when a photographer says, geez, smile please. We are only smiling when somebody is taking a photograph. But after the smile is gone, everybody back to their grave self. Everybody back absorbed in the same problem that was troubling them all throughout. They're troubling them for the smile, for the photograph. They are smiling, but actually, no. There are so many distresses, troubles troubling nowadays everybody. And now what we are saying that, oh, I don't have, everybody seems to be so troubled in this world today. Everybody seems to be lacking something. Oh, I lack this. And especially seeing somebody else's, whatever they are not satisfied by whatever they have. They are dissatisfied by what others have. They are always dissatisfied. If I have a Holden, I want a Mercedes. I want a better car. This is their problem. What they have, they are not satisfied with this. This is all such foolishness. This is destroying or wasting your valuable time. You haven't got anything. People are saying you haven't got anything. You have attained this beautiful human body. This beautiful human body is a boat by which you can cross this ocean of material existence. But this beautiful birth of human body, what you are doing? You are utilizing in sense gratification. You are wasting time in so many activities, but not utilizing what it should be utilized for. And although this body, and we are thinking that, oh, when I will grow old,
when I will grow old, then I will be able to chant, because then I will have some spare time and all. And what guarantee is there that you will be able to attain your old age? And what guarantee is also that even if you attain old age, what guarantee is there that you will have strength enough to chant? Gurudev used to say so many times, he said this. He said, he used to say all the time, he said, till you have strength in your body, till you have energy in your body, utilize all this strength, utilize all this energy, whatever time you have to chant, energy to chant and serve the Lord. The more you can, he said, use this body to extract as much spiritual devotional activities as you can from this body. He said, I am telling you from my example, I have desire to serve in so many ways. I want to chant, but I cannot chant because my body is failing me. My body is full of so many ailments. I am telling you from my example, do not wait for old age. Old age will cheat you. Old age will trouble you. Old age will distract you. And if you are waiting for that old age, it is only going to bring you troubles. Do not wait for old age. This time when you have the energy and time, this is the time when you should utilize for chanting and for performing devotional activities. And what question he also described that when we approach the sadhus, all these sadhus approach us, then we should not ask them, to resolve our material situations, to solve our material situations. Please help me in my business. Please get my son married. My daughter is not getting married. I'm not getting a proper match for my daughter, proper match. These things will be somehow or the other, they will be arranged. Only we should ask how to increase my interest in devotional activities. How can I chant more rounds? How can I perform more devotional activities? How can I become more enthusiastic in performing devotional activities? Look at Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj, what he is asking when he sat down, he is asking all the questions that he is asking are pertaining to devotional activities only. We should learn from Parikshit Maharaj that how he is so enthusiastic at the last time of his life also, he is asking questions, and by his question, of course, all the questions that he has asked to Shukadeva Goswami, those questions are what is consisting of this Srimad Bhagavatam, which all of us relish and have read so many times. He's saying, and then the other devotees there are Jigyasu. Jigyasu is like Parikshit Maharaj, who is enthusiastic, and then there is Jnani. Jnani, who is the Jnani Bhakt? The Jnani Bhakt is like the four Kumaras, and then the Arthati. Arthati means somebody who is begging for money or who requires wealth. Like the perfect example of Arthati is Dhruva Maharaj. Although he went to the forest to perform austerities, he performed austerities for such a long time, and he performed these austerities for material gain. He wanted to become the king, he wanted to have a kingdom better, bigger than his father. But the moment he got darshan of the Lord, what was his desire then? The moment he got the darshan of the Lord, he said, I was looking for a piece of glass, and now I obtained diamond. Why do I require the kingdom bigger than my father? But the Lord says, because you have had my darshan never goes fruitful. That desire will be fulfilled, plus your spiritual desires also will be fulfilled. So understand that by these examples, you must understand that actually, even though your material desires may be fulfilled sometime, but still you will not be satisfied. In the end, you will have only interest in devotional activities after having an association with the devotees, after chanting, etc. You will have more and more interest in this, and gradually this interest in material activities will go away. So if it will go away, why wait? Why not perform to the fullest? Why the fullest strength that we have, why the full opportunity that we are getting? Why not perform our devotional activities right from this moment? Why wait to lose interest in material activities? And it is not difficult to lose interest in material activities, material matters, etc. Just by sitting down, absorbing, and getting a little taste in chanting, you will automatically lose interest in all material activities, etc. And he's saying that how, and the Arti, the example of Arti means one who is in distress. One of the perfect examples is the Gajaraj. When Gajaraj, he was caught by the crocodile, and he was pulled deeper and deeper into the ocean. And that time he called out to the Lord from his past life. He had the impressions, and that's why he called a lotus flower and he was offering to the Lord. And the moment he called out to the Lord was eating his meals. Lakshmiji had served him. And the moment the elephant called him out,
he immediately got up and he started running towards the elephant to save it. And the Lakshmi asked him, "Where are you going?" And he ran in such, it is described in the scriptures, it said that he ran with such speed, in such a hurry, that Lakshmi is asking, "Where are you going?" He said, "Ha." Ha means, it is Hathi. Hathi in Hindi means, or Sanskrit means elephant. He said Ha when he got up, and Thi he finished after saving the elephant. So if you call out to the Lord, that is the enthusiasm that Lord shows to come and save you. तो इस श्लोक में गोपियों ने भगवान जी को पाने के लिए, ढूंढने के लिए कैसे बुलाए। सब गोपियां रो रही हैं और भगवान को पुकार रही हैं। जरा सा कल्पना करो, 100 करोड़ गोपी एक साथ रोएगी, एक व्यक्ति रोएगा तो कितना तेज आवाज होती है। और 100 करोड़, एक नहीं, दो नहीं, 100 करोड़ अगर लोग रोएंगे एक साथ तो कितना हल्ला मचेगा, है ना। लेकिन नहीं, ये रो नहीं रही है, नहीं रो रही है, रुरुदु सुशरम। 100 करोड़ गोपियां रो रो करके गा रही हैं, और एक ही स्वर में, एक ही ताल में, एक ही लय में, एक ही राग में गा रही हैं। एक व्यक्ति गाए और 1000 व्यक्ति एक साथ वही कविता गाए तो सुनने में कितना सुंदर लगता है। और गोपियां साधारण नहीं है, ये सब लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान। ये गोपियां कौन है? एक गोपी मानो हजारों लक्ष्मी इनके चरणों में लोटपुट खा रही है। ये गोपी साधारण नहीं है, ये लक्ष्मी स्वरूप है। तो ये जब गाती हैं, तो एक स्वर में जब गाती हैं तो एक इतना सुंदर, एक आनंद का एक लहर, आनंद का एक तरंग की सृष्टि होती, भगवान को खींच के लाती। अब भगवान के चरणों में 4 प्रकार के गुण गोपियां बता रही हैं इस श्लोक में। सबसे पहले क्या बताया कि प्रभु प्रणत देही नाम। प्रणतः जो आपके चरणों में नत हुए, नत, नत मतलब जो आपके चरणों की शरणापन्न हुआ है। प्रणत देही नाम, जो भक्त आपके चरणों में समर्पित हुआ है, ऐसे भक्तों के लिए आप क्या करते हैं? पाप कर्षणम ते पदाम्बुजम। आपके चरण पदाम्बुजम, चरण कमल का क्या विशेष गुण है? जो आपकी शरण में गए, आपके चरणों में समर्पित हो गए, पाप कर्षणम, आप उन सब का पाप खींच लेते हैं। तो चरण का पहला गुण क्या बताया कि जो भी भगवान के चरणों में जाएंगे, समर्पित होंगे, उसका सारे पाप को खींच लेते हैं। पहले पाप खींचता है, क्यों? इसलिए भगवान का एक नाम है हरि। हरि का मतलब भक्तानाम कामम क्रोधम लोभम पापम हरति थी हरि। पहले पाप खींचता है, क्योंकि व्यक्ति के दिल में पाप होगा तो साधन भजन में मन नहीं लगेगा, कथा में रुचि नहीं होगी। जैसे घी जब जम जाता है तो उस जमा हुआ घी से प्रदीप नहीं जल सकता, घी को पिघलना पड़ेगा, है ना। घी पिघलेगा तो उसी से दिया हम दिखा सकते हैं, उसी से प्रकाश होगा।
जैसे पानी जब बर्फ बन जाता है, जब बर्फ बन जाती है तो पानी जमा हुआ पानी से अपना मुख उसमें प्रतिफलित नहीं होता, अपना मुख नहीं दिखाई देता, अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, बर्फ में नहीं दिखाई देता है, लेकिन स्वच्छ पानी में दिखाई देता है। तो पानी जमने के बाद जब बर्फ बन जाती है उसी से अपना प्रतिबिंब प्रतिफलित नहीं होता है। वैसे आदमी के दिल में जब पाप जम जम करके पत्थर जैसा हो जाते हैं, तदा संसारम, पाप करते 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 जन्मा जन्मांतर का पाप जम जम करके बिल्कुल काई जम जाती है, पत्थर बन जाते हैं। ऐसे पत्थर दिल वाला पाप हृदय वाला व्यक्ति भगवान की कथा ना सुन सकता है, ना कथा कीर्तन कर सकता है, ना भजन कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? कथा में अगर मन नहीं लगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो प्रणत देना, भगवान की शरण में जाने से तब जाकर के भगवान हमारा पाप को दूर करेंगे। लेकिन शरण में आए कैसे? हमारे दिल में तो पाप है। तो इन पाप को दूर करने के लिए पहले क्या करना? शतानुप्रसंगान मम बीज संविदा भवंत रीतकर्ण रसायन कथा तर्क सनातश्च अपवर्ग वदमनि श्रद्धा भक्ति रति कवशति। साधु संग करो, संतों का संग करो, हरि कथा सुनो, तीर्थों में घूमो और महात्माओं की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो। क्योंकि तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम्हारा तन नहीं लगता है, तो तुम्हारा धन लगता है। तन मन धन कायेन वाचा मनस इंद्रियाणाम, तीन प्रकार की सेवा होती है शरीर से, लेकिन आपका शरीर चलता ही नहीं, कैसे करोगे सेवा? आप रसोई बना नहीं सकते, श्रृंगार कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे? कीर्तन कथा सुनो, मन नहीं लगता, रुचि नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में अपना धन लगाओ। धन नहीं है तो मन लगाओ, मन नहीं है तो तन लगाओ, लेकिन तन मन धन तीनों में से एक तो लगाना ही चाहिए। और तीनों में से तीनों तो लग गया तो फिर तो काम बन जाएगा। बलि महाराज जी को भगवान ने क्या दिया? अपने चरण ही दिया शिष्य। क्यों दिया? क्योंकि बलि महाराज एक ऐसे भक्त हुए, तन मन धन ये तीनों दे दिया। पहले भगवान को धन दिया, फिर लोग दे दिया, फिर क्या दिया? अपना मन को दिया, फिर तन दे दिया। भगवान के चरण में सिर को नत कर दिया, सिर झुका दिया। इसलिए उसी समय से नाम पड़ेगा बलिदान, बलि महाराज के नाम से। जैसे ब्रज की गोपी सब कुछ छोड़कर भगवान का हो गए। तो पाप कर्षणम, हे प्रभु जो आपकी शरण में जाते हैं, आपके चरणों का पहला गुण है उसका सारा पाप को आप दूर कर देते हैं, पहला लक्षण है। क्योंकि जब तक पाप रहेगा भजन में मन नहीं लगता, कथा सुनने में रुचि नहीं होती। पाप कर्षण माने गोपी कहती है प्रभु आपके चरणों में केवल पाप आकर्षण करने का गुण नहीं है, और भी गुण है। तो दूसरा गुण क्या बता रहे हैं? तृणचरानुगम। तृणचरानुगम मतलब तृण मतलब होता है घास, और चरा मतलब होता है घास को जो चरता है। कौन? गाय। बोले आप तो अपने चरण के द्वारा पापियों का पाप तो दूर किया, लेकिन उन चरणों से अब और एक भी काम किया। और एक काम क्या है? जब आप वृंदावन में आए वैकुंठ छोड़ करके, तो जिन चरण के प्रभाव से पापियों का पाप दूर किया, वह चरण आप लेकर के गायों के पीछे पीछे भाग रहे। तृणचरानुगम, तृणचर का मतलब होता है गाय, तृण मतलब होता है घास, और चरने वाली जो गायें होती हैं उनके पीछे पीछे भगवान भाग रहे हैं गाय चराने के लिए। गाय चराने जाते हैं। आगे कहेंगे अटति जग भगवान नंदी काननम तुभी युगाते त्वम परसतम
कुटिल कुंतल ते मुखांचते जड़ उदीक्षताम पक्ष पुरुषा। इस श्लोक की शुरू में कहा कि अटति जग भवान नहीं कानन अटगतो धातु। अब जब वन में जाते हो, कानन में जाते हो, तो भगवान वन में क्या करने जाते हैं? ये गाय चराने जाते हैं, गौ चराने जाते हैं। तो गोपी कहती हैं जो चरण गोपियों के दिल में रखना चाहिए, हृदय में रखना चाहिए, वह चरण लेकर के आप गायों के पीछे पीछे भाग रहे हो। अरे भाई, जंगल में कितना कंकड़ है, पत्थर है, कितने कांटे हैं, कहीं कहीं तो इतना कठोर है, लेकिन आपका चरण कितना सुखद, कितना नरम, कितना मुलायम, कितना ही सुंदर। और वही चरण कंकड़ के ऊपर से तुम चलते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बार एक गोपी के घर से भगवान माखन चुरा के भागने लगा, तो गोपी ने देख लिया, तो ठाकुर जी को ऐसा लगा कि ये गोपी हमें पकड़ ना ले। क्यों? पकड़ने से क्या हानि है? बोला हानि ये है कि गोपी पकड़ करके मारती तो नहीं, डांटती भी नहीं, करती क्या है? पकड़ करके मां यशोदा के पास लेके जाती है। मां यशोदा मानती नहीं कि मेरा बेटा चोर है। गोपियां उलाना देती हैं कि तेरो लाल हमारे घर में जाके माखन मिश्री चुराते हैं, लेकिन मां यशोदा कहती है मैं ऐसे ना मानू, पहले या तो पकड़ करके लाइयो, रंगे हाथ पकड़ करके लाइए तब मानू, ऐसा ना मानू। और हमारे घर में काय चीज की कमी है भैया, मेरे लाल तेरे घर में जाके चोरी करे, हम ना माने तेरी बात। गोपी का जो उल्हाना है, ये अभियोग है, ये शिकायत है, ये तो केवल मात्र कृष्ण दर्शन की लालसा। गोपी कहती है इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना। श्री कृष्ण चरण कमलों में मन को लाना, गोपियों की उलाना, गोपियों की ताना तो बहाना है। पहचान गई परमात्मा परमेश्वर, लेकिन किसी प्रकार का ऐश्वर्य भाव नहीं है। ऐश्वर्य ब्रज में माधुर्य से ढका हुआ है। तो गोपी ने देख लिया, ठाकुर जी ने सोचा, कन्हैया ने सोचा मेरे को पकड़ के मां यशोदा के पास लेके ना जाए, इसलिए क्या करने लगे? जल्दी जल्दी भागने लगे। लेकिन रास्ता और नहीं मिला। जमुना जी के किनारे गर्म तप तो बालू के ऊपर से भाग गए। दोपहर के समय रेत गर्म हो गया, रेती बालू उसके ऊपर से दौड़ रहे। तो गोपी कहती है नीतम नीतम यदि नव नीतम, अब तक तो घुमो माधव माधव माधव। अरे कन्हैया, अरे लाला, माखन लिया तो क्या हुआ? नीतम नीतम यदि नव नीतम, नवनीत मतलब माखन। अरे माखन लिया तो क्या हुआ, लेकिन अब तक तो घुमो माधव। ये गर्म रेत के ऊपर, भूमि के ऊपर माधव माधव माधव, हे माधव माधव, ये शब्द का चमत्कार है। माधव माधव माधव, हे माधव। धाव धाव बतो धातु, दौड़ो नहीं दौड़ा नहीं बाबू। गोपियों का अंदर प्रेम है। तो गोपी कहते हैं जिन चरण को गोपियों के हृदय में धारण करने चाहिए, वो चरण लेकर के तुम गायों के पीछे भाग रही हो। और इसका मतलब ये है हमसे भी ज्यादा सौभाग्य तो गायों को मिला है। गाय तो अवला है, वो क्या जानते हैं तुम्हारी महिमा, हम तो जानते हैं, लेकिन तुम गाय को इतना इज्जत देते हो और हमारे प्रेम को ठुकरा देते हो। ये क्या तुम्हारा प्रेम? गोपियां रो रही हैं, चीख रही है। आखिर गोपियों के अंदर ये रोग कहां से आया? क्या रोग है? यह है प्रेम रोग। गाय को कोस रही है, बंसी को कोस रही है। जब बंसी बाजती है तो गोपी कहते देख मेरी सोतन है, कभी ढोल बाजे, कभी सांझ बाजे, कभी बजने का कोई वो नहीं है, टाइम नहीं है।
हम बांस की झाड़ में आग लगा देंगे ताकि बंसी ना पैदा हो। ये सौतन है मेरी। कहता दामोदर अधर सुधामती, जो दामोदर का अधर सुधा हम गोपियों को पीना चाहिए, ये बंसी पी रही है। बंसी की महाराज यहाँ बंसी को कोस रही है, यहाँ गाय को मारने कह रहे, गाय के पीछे भाग रहे हो तुम। ये क्या है? प्रेम रोग है। हमने पहले दिन बताया था ये प्रणय भाव है, जल्प अजल्प प्रजल्प अभिजल्प, ये किससे है? रस का आस्वादन। मानो एक गोपी बड़बड़ा रही थी, राधा जी बड़बड़ा रही थी, कृष्ण भाव में प्रेम में कवि जटिला कुटिला डर गई, क्या हो गए मेरी बहू को। किसी वैद्य को बुला के लाया, लेकिन वैद्य तो और मिला ही नहीं। मेरे प्यारे श्याम सुंदर ही वैद्य बन करके आए। जटिला कुटिला को कुछ भी मालूम नहीं है और किशन जी को भी कुछ भी मालूम नहीं है। और जटिला कुटिला ने कहा मेरी बहू जब अकेली होती है कुछ बड़बड़ करके बोलती रहती है, किसी से बात करती है, समझ में नहीं आता किससे बात करती है। कोई ना हो तो बात करे अपने आप से, तो उसको पागल कहा जाता है। कोई कहीं मेरी बहू पागली तो नहीं होगी। वैद्यराज से कहा कि आप इनका हाथ पकड़ के कहो। तो पहले डॉक्टर क्या करते थे, नब्ज पकड़ करके बता देते थे अंदर क्या रोग है। तो मेरी राधा जी कह रही है मेरी नब्ज पकड़कर, वैद्य ने क्या कहा, नब्ज पकड़कर कहा तुम बीमार हो। लेकिन बीमार क्या है? नब्ज पकड़ करके, मेरी नब्ज पकड़ कर कहा बीमार, लिख दिया बीमार। मेरी नब्ज पकड़ कर लिख दिया बीमार। लेकिन बीमार क्या है? बीमार क्या है? बीमार में क्या लिख दिया? बोले बीमार में है अपने कृष्ण का, अपने दोस्त का रोग है, कृष्ण रोग है। लेकिन इसका दावा क्या है? गोपी कहती है पूरी उम्र भर हम उनकी एहसान मानेंगे, पूरी जिंदगी भर, उम्र भर उनके एहसान को हम याद रखेंगे, क्योंकि दावा में उन्होंने जो बताया हम तो निहाल हो गया। दावा क्या बताया? बोले दावा में क्या है? अगर बीमार है तो क्या दावा लेना चाहिए? बोले दावा ये लो कृष्ण का शंकर, यही तुम्हारा दावा है। तो ये गोपियों का ये प्रेम है। ध्यान करे त्रिनाचरानुगम, तुम गाय के पीछे भाग रहे हो, ये प्रणय भाव है। So we are hearing this Gopi Geet. What is Gopi Geet? Gopi Geet is the singing, and simultaneously they are singing and simultaneously they are crying for the Lord, and they are singing these prayers, these beautiful words. Now, just imagine how many gopis are there, who are sitting on the banks of the Yamuna and singing in the forest in the middle of the night. How many gopis are there? It is described that it is 100 crore gopis, or 1,000 million gopis. And if one person is crying, the sound is loud enough to wake the entire neighborhood. Entire neighborhood is disturbed. But now the gopis are crying, so what kind of sound it will be and how loud it will be. But he's saying this is not crying like ordinary people cry in this world. This is the beautiful songs, the beautiful heartfelt words, and the heartfelt emotions that they are feeling in their hearts, which is coming out as words from their lotus lips. This is what is Gopi Geet. And when they're singing, the singing is not like the singing of the ordinary world. Suppose we perform Kirtan here, then maybe 10-12 people will sit down, one person is leading, then maybe 10-12 people are singing, and there are 4, 5, 6 different melodies being sung. Yeah, there are somebody singing a little off, somebody singing a little higher note, somebody singing a little lower note. But when all these gopis are singing, they all are singing in same melody, with same beats,
everything exactly super mass, super harmonious. Why? Because understand, these are not ordinary people who are singing this Gopi Geet. Who are they? They are the expansions of Radharani herself. Each and every Gopi actually, it is described, in some places described that, oh, they are the shelter of the Lakshmis. What it means, shelter of the Lakshmis, all these Gopis, hundreds and thousands of Lakshmis, they come and bow down in respect, in honor to each and every Gopi who is singing there. They are higher than all the Lakshmis that they are present in the world, in the universe. And when they sing like this, so beautiful, they are singing, then what happens? It is said that Krishna has promised this, that if suppose somebody sings my bhajan, somebody sings, calls me out by singing for me in bhajan, etc., I reach that place. I am definitely in that place. Now these are the highest and topmost of the devotees. When they are singing, Krishna is pulled by that singing. He cannot stay away. He is pulled by the beautiful melodious song of theirs, by the beautiful emotions that they are manifesting in this beautiful poetry. He is pulled there. And then in this shloka, they are actually describing the 4 qualities that are in Krishna's feet. There are 4 qualities in Krishna's feet. We will discuss this one by one. So the first it is described, Pran Denam Papa Karshanam. He's saying, the Gopis are saying, Pran Denam Papa Karshanam. They're saying that those pranat means those who surrender, and Papa Karshanam means Karshanam means the sins are attracted away or pulled away from that. One of the names of the Lord is Hari. So one of his qualities is that Hari means he is able to attract the minds of the people. Also, he is able to take all the sinful activities, sinful reactions of the person. And why is taking the sinful reactions of the person? From everybody who is Pranat Dehinam. Pranat Dehinam means one who has come and surrendered, Pranat, who has come surrendered to you, he takes away all the sinful reactions of that person. In the beginning, when a person comes, then he immediately takes away all the sinful reactions of such a person. Now somebody may ask that why is it required, why in the beginning does he take away these sinful reactions of a person? Because you are not able to chant, you are not able to absorb yourself in devotional activities, or we are not able to absorb ourselves in devotional activities because of the sinful reactions which have made our soft heart hard like a rock. Because of all the sinful activities that we have performed in so many lives, and it has made our heart hard-hearted like a rock. So first of all, he has to take away these sinful reactions, these sinful activities from our heart. Not only the sinful reactions, but also the desire to perform sins. He has to take this away. Unless and until these will go away, you will not find chanting enjoyable, to serve the Lord. You not enjoy, you not relish the serving the Lord. You will want to sit down in Harikatha. Your mind will not be able. You will not be able to concentrate by your mind. Your mind will always go here and there. Your mind will waver. So the first thing that a person does, first thing that the Lord does, suppose somebody comes, surrenders to Him, He will take away his sinful reactions. It is described that how, like, when you have to make a ghee lamp, that sometimes in the winter we see that the ghee is very solid, pretty strong. And then you use this in ghee wick, but the wick will not light unless and until the ghee is melted. Similarly, unless and until our heart is melted, the effect, the total proper effect, the full effect of the chanting or service of the Lord or relishing that the taste that we should get from these activities and all, we will not be able to attain them fully unless and until our heart melts. Or we also know that the water usually is liquid, and clear, crystal clear water, if you go near the crystal clear water, you will immediately see your reflection. You immediately can see your reflection, but the same water, when it turns to ice, now you can no longer see it becomes hard like a rock, and you can no longer see the reflection. So similarly, the ice has to melt, again become pure water, clear water, and then you will be able to see your reflection. Similarly, unless and until your heart will not be melted, you will not be able to realize your own self, who you are, what is your spiritual identity. So that's why Krishna, first of all, what he does when anybody comes to him, he takes away their sinful reactions, he takes away the desire to perform sinful activities.
Krishna says that, oh, you give me manmana bhava, that you give me your mind. Somebody may say that, oh, I cannot give my mind. My mind is so fickle. I am so restless. I cannot give my mind. Instead, how? There are three ways in which you can serve the Lord. You can serve the Lord by tan, man, or dhan. So tan means you can serve the Lord by your body. Man means you can give your mind, like the gopis have given their mind, they're totally attached to the Lord. Or you can give by dhan, by wealth, by money. At least if you're not able to give your mind, if you're not able to give your body, you're not able to serve to the body, at least utilize your wealth for the Lord. When some devotees come, try to serve them with the money. Try to use this money to go to holy places. Try to visit the temples. Try to attend the artis. Use the money, whatever wealth you have. Try to use in the service of the Lord. As you will keep on, when you will use this money, gradually your mind will become absorbed, and gradually you will be able to serve with your body, mind, and your life. Who served him in this manner? There was one devotee who served, very famous example in Srimad Bhagavatam, who served the Lord with all the three, tan, man, and dhan. Bali Maharaj. Bali Maharaj first, Bali Maharaj, he was the one who served the Lord. He served the Lord in all three ways, tan, man, and dhan. First, when he saw the Lord, his mind became attracted. Then he became ready, he promised the entire wealth that yes, you can take 3 steps. After that, when the Lord took away everything from him and nothing is left, then he surrendered his own entire self to the Lord. This is a perfect example that how a devotee like Bali Maharaj, he served the Lord in all three ways, on all three manners. And that is why, since he served the Lord in all three ways, after that, the sacrifice became known as Balidan. Sacrifice became known as Balidan. Balidan means a sacrifice. So gopis are describing the first quality of the lotus feet of the Lord, but there is another quality of the Lord, or the lotus feet of the Lord. There is another quality also. The other quality is Trincharanugam. He's saying Trincharanugam means that when you come to Vrindavan and you have destroyed all these sins, those who come to Vrindavan, maybe they have come after you have destroyed the sins, and what do you do? And what are you doing in Vrindavan? In Vrindavan, you are taking the cows and you are grazing the cows. With these feet, these lotus feet, which are worshipable, which are fit to be put on our chest, they are so soft. They are so soft that they should be put on our chest. When we see you grazing the cows in the deep dark forest and running after chasing the cows, we feel so much pain in our hearts. We feel so much pain in our chest that these very beautiful, these very soft lotus feet of yours, they are grazing the cows, because the forest is not an ideal condition to walk. And on top of that, you don't wear anything in your feet. You are walking bare feet. And there are so many thorns there, pebbles, sharp pebbles. And when we think about this, we become maddened that how much pain you are going through just because you are wanting to graze the cows. One time it is described that Krishna, this is his nature, that in Vrindavan he performs so much activities and he's running here and there. Once it is described, there is one pastime that how Krishna, once he went to a gopi's house, and from that house he stole some butter and he was running away. After stealing the butter, because he saw the gopi had seen him, and he does not want to be caught by the gopi. It's not that the gopi catches him and she thrashes him or she chastises him. The gopis do not chastise him. The gopis do not thrash him. But still he is afraid of the gopis. Why? Because every time the gopis will catch him, the gopis will take him to Mother Yashoda. Because Mother Yashoda, they complain to Mother Yashoda that the gopis are complaining to Mother Yashoda that, oh, your son is such a thief. Mother Yashoda never believes this. He said, my son a thief? What is lacking in my home and what is more in your home? What do you have more than me that Krishna should come and steal butter from you, steal something from you? What do you have such that he should come to your home to steal? He said, I don't believe all this, what you are speaking. So the gopis, whenever they catch Krishna, Mother Yashoda says that yes, if you will catch him someday red-handed and you bring him to me, maybe then I will believe. So that's why he's now when he's thinking that she will take me to Mother Yashoda, he's running away. And when he's running away, it is midday sun, very hot. And while running, he's running, and he cannot find any path to go. Then he goes through a lane, and
and that lane is ending in the gopis chasing right behind, and that lane is ending on the banks of the river Yamuna. And when he is running towards the bank of the river Yamuna, that time he starts running on the hot sand. When he's running on the hot sand, then she's saying, Nitam Nitam, Nitam Nitam, Yad Nam Nitam Madhava 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 Madhava. This is a trick play of words. Listen to this carefully. What she's saying? He's saying, Nitam Nitam means don't run. Nitam Nitam, no need. He said, Yadi Nav Nitam means, now here means the butter. He said, you have stolen the butter, let it be, but please don't. Madhavo means don't run Madhava. He's saying Madhava. He's saying, oh Madhava, don't run, oh Madhava. Means don't run, oh Madhava, oh Krishna, don't run, no need for you to run. Means when they see him running on this hot sand, they become disturbed that let him take this butter, let him steal whatever he wants. Because why are they like this, behaving towards him like this, that oh, they want to catch him, they want to take him to Mother Yashoda. Actually, they go to complain to Mother Yashoda or to anybody. Why? Because they have recognized him, that he is the Supreme Personality of Godhead. Because they have recognized him that, oh, you are the Supreme Personality of Godhead, so that's why they find his topics to be very relishable. They want to discuss. To complain about him is not the real subject matter. The real matter in this is that they want to discuss Krishna and his pastimes. They get a chance, whomever they speak, whomever they hear, they want to discuss his pastimes. So one of his most beautiful pastimes is the stealing of the butter. And then through this, complaining about him, actually complaining to Mother Yashoda, all the gopis gather together. Butter is stolen in one home, but all the gopis from all the brats will gather together every day in Mother Yashoda's home, discussing Krishna's pastimes. So this is just an excuse to discuss Krishna's pastimes, to look at Krishna, to admire his beauty. This is just an excuse. And further they are saying, and then there is the next line is saying, this Trin Charanugam means that who are this Trin Charanugam? Trin Charanugam means the cows. The Trin means the grass, and Chara means those who are grazing or eating this grass. So it means these cows. He's saying, these lotus feet of yours, they are so delicate and so soft, and instead of putting them on our chest where they will be safe, where they will not be harmed, you are grazing the cows and you are running, chasing behind the cows. He's saying, you are refusing our praying. We are refusing our praying, and instead you are chasing these cows. So like this, they are crying. They are crying, and they are crying and they are speaking like this as if mad. As if they are mad. What is this? This is described as prem roga, or the disease of the heart. When somebody falls in love, they behave like this towards and they are falling in love, and that beloved is not able, they are not able to associate with that beloved, then they become disturbed in mind. They nearly become like mad, like crazy. Like Radharani also sometimes she behaves like this, as if she is crazy. Sometimes when she is alone in the room, that time she is murmuring to herself. And Jatila and Kutila means Radharani's mother-in-law and sister-in-law. When they hear this, that she is murmuring to herself, they go and check the room. But they see that nobody is in the room. When they see nobody in the room, they wonder that whom is she speaking to? Then they come to this conclusion, it looks like there is something wrong with Radharani's mind. Who laughs and who speaks alone? If somebody is speaking alone, understand that that person is crazy. So that they begin to think that maybe he's crazy, so they search out, they send out somebody, please go and find a doctor who will come and see what is wrong with our daughter-in-law, our sister-in-law. So who comes to the doctor? Who comes as the Vedanta? Krishna himself. He disguises himself as the doctor, and he comes, and now the people are saying, please see what is wrong with her. Just hold her wrist. Holding the wrist means you can, by the beat of the blood vessels, etc., you can understand what is wrong with her. Earlier, this art was very prominent. Nowadays, also some people have this art, some people still it is present. So they are asking to Krishna that, please tell what is wrong with her. Then he's saying, Krishna, when he sees this nerve, he's thinking that, he says, yes, you are suffering. I know you are suffering. Definitely he has declared that you are sick. And the gopis are saying, you have declared that we are sick. That is okay.
that is okay that you have given this title that we are sick, but we are very happy that by the medicine that you have prescribed. Whatever you have said that we are sick, we agree with this, but we are very happy because the medicine that you prescribed is very, very dear to us. What medicine did you prescribe? He said, this Radharani is suffering from the disease of separation from Krishna. Because she is suffering from the disease of separation from Krishna, so she should, the only medicine prescribed for her is to associate with Krishna. So the Gopi said, because you have prescribed such a beautiful medicine, we are very happy with you. We are very happy with your diagnosis of the disease, and we are very happy with the medicine that you have prescribed. तो गोपियां यहाँ भगवान के चरणों में 4 प्रकार के गुण हैं, यहाँ बता रहे हैं। तो पाप दर्शनम प्रेरणाचरणम, ये 2 बता दिए। अब श्री निकेतनम, श्री मतलब लक्ष्मी, निकेतन का मतलब आश्रय। भगवान का चरण क्या है? लक्ष्मी जी का आश्रय यानी रहने का स्थान है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? भगवान किसी चरणों में रहती है। इसलिए हमेशा लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती है, पतिव्रता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के चरण के बिना लक्ष्मी के पास कुछ भी नहीं। तो श्री निकेतनम मतलब जिन चरणों में लक्ष्मी हमेशा रहती हैं। गोपी को कहने का मतलब है कि आपने चरणों में लक्ष्मी को हमेशा रखते हो, हमेशा रखते हो। लक्ष्मी तुम्हारी अपनी है, इसलिए क्या हम तुम्हारे पराये हैं? लक्ष्मी को हमेशा चरण में रख सकते हो, क्या हम लोगों को चरण में नहीं रख सकते? क्या आपका चरण हमारे हृदय में धारण नहीं कर सकते? तो आपके चरण का गुण क्या है कि लक्ष्मी स्वयं आपके चरणों में सेवा करती है, दिन रात आपका चरण छोड़ना नहीं चाहती है। ये गुण है। और चौथा गुण बताया, मैं बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि समय तो हो चुका है और थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। चौथा गुण बताया, फनी फनार पितम ते पदाम गुण। गोपियों ने कहा तुम तो बिल्कुल हद कर दी, तुम प्रेम जानता ही नहीं। अरे लक्ष्मी को दिया कोई बात नहीं है, तुम गाय के पीछे भागते फिर भी चलेगा, पापियों का पाप दूर करते हो फिर भी चलेगा, लेकिन अब तो चौथा नंबर गुण क्या है? फनी फनार पिता, जो कालिया नाग के शीश के ऊपर आपने तांडव नृत्य किया। जो सांप पूरे जहरीला होता है, जहर भरा होता है, कुटिल स्वभाव के होते हैं, ऐसे सांप के मस्तक पर आपने दोनों चरण रख दिया। सांप का कितना सौभाग्य है कि जिनके शिष्य भगवान के दोनों चरण रखा हुआ है। सांप का इतना सौभाग्य मिल गया, लेकिन वो चरण हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए जब भगवान कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया तो उनकी पत्नियां कहती हैं, कष्टानुदेव विग्मय तवांगी रेणु पश्चाधिकार यद वांछा शिचरत्ता पलरना विहाय कामांचिर धितव्रता। मेरे पतिदेव तो खर स्वभाव के हैं, सांप है, नीच से नीच ये जाति में है। सांप को कोई भी देखते हैं मार के फेंक देते हैं, कोई प्यार नहीं करते। कोई लोग अपने घर में सांप नहीं पालते हैं, लेकिन ऐसे कुटिल स्वभाव इस कालिया नाग के शीश के ऊपर आपने मस्त दोनों चरणों से नृत्य किया। तवांगी रेणु पश्चाधिकार, जिन चरण की चाह स्वयं लक्ष्मी हमेशा रखती हैं। लक्ष्मी हमेशा कहती हैं प्रभु अपने चरणों में रखना, लेकिन लक्ष्मी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। वृंदावन के कृष्ण के चरणों में लक्ष्मी गई, लेकिन भगवान वृंदावन में स्थान नहीं दिया।
वो बेलवन में जाकर के तप कर रही है, लेकिन वही चरण तुम कालिया नाग के ऊपर दोनों चरणों में से नृत्य किया है। तो कहते हैं प्यारे, जो चरण के द्वारा कालिया नाग के जहर को निकाल सकता है, गुण क्या है कि चरण लेकर के नृत्य नहीं किया, कालिया नाग के ऊपर ऐसा नृत्य किया, उसका फन फाड़ जाते हैं, मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। जैसे ही रक्त निकल गया, रक्त मतलब राग होता है, संसार का राग, संसार की आसक्ति, जैसे उसके मुंह से रक्त निकल गया, कालिया हो गया विरक्त, और जैसे विरक्त हो गया तो ठाकुर जी के चरणों में हो गया अनुरक्त। रक्त मतलब संसार का राग, विरक्त मतलब संसार का वैराग, और अनुरक्त मतलब भगवान के चरणों में प्रीति और प्रेम और प्यार। ये प्यारे कालियों का इतना सुंदर सौभाग्य है, इन चरणों से क्या क्रेणु पूछे सुनो कृंद, आपका चरण हमारे हृदय में धारण करो। मानो भगवान ने कहा फिर क्या होगा, बोले हमारे अंदर जो कृंदी हिक्षयम, हिक्षयम का मतलब है कि हमारे हृदय में जो काम है वो कृंदी, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, यानी काम आपसे मिलने के लिए जो विरह ज्वाला है वो शांत हो जाएगा, काम पीड़ा प्रशमित हो जाएगा, शांत हो जाएगा। या आपका ऐसा चला तो कृष्ण ने मानो कहा कि भाई ये जो गोपियों का भाव है कि आपका चरण हमारे दिल में रखो, हमारी काम पीड़ा ठंडा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो ये तो शाश्वत वासना होगी। लेकिन गोपी तो ऐसे नहीं है, इसमें भगवान का क्या फायदा है? बड़े ध्यान से सुनना। गोपी कहती है आपका चरण हमारे दिल में रखो, हमारा काम पीड़ा शांत हो जाए, तो ये तो अपनी मतलब की बात कर रहे हैं। बोले नहीं, इसमें भी कृष्ण का ही सशुद्ध वासना है, गोपियों का सशुद्ध वासना नहीं। बोले वो कैसे? बोले जैसे किसी आदमी के घर में उसका एक मित्र आया, अब मित्र को आते हुए देखकर उसने एकदम उसको खाने के लिए भागदौड़ करने लगे, भाई कहां से क्या लाओ, सब्जी लाओ, पनीर लाओ, मटर लाओ, क्या बनाओ, इसके लिए दौड़ने लगा, इधर उधर बिजी हो गए। तो मित्र कहते हैं, जो मित्र इनके घर में आए, का मित्र हमारे देख के आपको इतना व्यस्त होने की आवश्यकता नहीं है, बिजी होने की आवश्यकता नहीं है, आप शांत बैठो, जो मांगते हैं वो हमें खिलाओ। अगर जो मित्र के घर में आए वो अगर सच बोल दे कि भाई हम लोग तो ऐसे खाते हैं, तुम आए हो इसलिए हम भागदौड़ करके तुम्हारे लिए बना रहे हैं, तुम आए हो तो तुम्हारे लिए तो बनाना ही पड़ेगा, तो उसका मन खराब हो जाए। अगर ऐसी बात कहे, अरे तुम आए हो ना, हम लोग के इतना परेशान हो रहे हैं, भागदौड़ करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम, लेकिन ऐसा बोल ही नहीं सकते। वो क्या बोलते हैं, इस बात को घुमा के बोलते नहीं नहीं नहीं, अरे दौड़ने की क्या बात है, अब टेंशन मत लो, सब्जी सबसे रखी हुई है, बनाना है, और रोज तो हमारे घर में ऐसे ही बनती है, या आपके लिए नहीं है, चलो आप आए हैं, कम से कम आपके बहाने में हमें भी तो भोजन अच्छा मिल जाए। तो ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब है कि ये किसका सुचार है? मित्र का सुचार है। ये अपने लिए भले ही कह रहे हैं कि तुम्हारे बहाने में हमको भोजन मिल जाए, हम तो रोज ऐसे खाते हैं, तुम्हारे लिए हम बिजी नहीं हो रहे, व्यस्त नहीं हो रहे। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अपनी वासना के लिए नहीं बोल रहे कि हमारे को अच्छा खाने को मिलेगा, कि कोई घर में आ गए मेहमान तब खाना अच्छा खाते हैं, अपने ससुर वासना नहीं है, वो मित्र की ससुर वासना। ऐसी गोपी कह रही है कि तुम अपना चरण आप हमारे दिल में रखोगे तो हमारा काम शांत हो जाएगा। तो ये ससुर वासना नहीं है कि कृष्ण को अच्छा लगेगा अपने चरण कमल हम गोपियों के प्रेम हृदय में रखने से उनको अच्छा लगेगा। तो कृष्ण इच्छा ससुर वासना या गोपियों की ससुर वासना नहीं है। तो मित्र घर आने से
जिस प्रकार ये मित्र उसको समाधान किया, जैसे बोला। अगर वो ये कह देता, अरे तुम तो आए हो बहुत दूर से, सुबह से खाया नहीं, पता नहीं घर में इतना भी ठीक से खाए नहीं होंगे, और देखो ये बढ़िया चीज तुम्हारे लिए बना रहे, ये तुम खाए कभी देखो, खा के देखो, उसका मन बिल्कुल खराब हो जाएगा। जैसे एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना। एक बार किसी घर में कोई मेहमान आया, तो उसको तो दोपहर को भोजन करवाया बढ़िया अच्छी तरीके से, लेकिन शाम को उसको भोजन नहीं करवाना चाहते थे। किसको? जो मेहमान आए थे। ध्यान से सुनिए आप। जो मेहमान आए उसको दोपहर को तो खिलाया बढ़िया तरीके से, लेकिन शाम को उसको खिलाना नहीं चाहते। तो उसके बेटा से कहा, देख जब मैं अपने मेहमान के पास, अपने मित्र के पास बैठे रहूं, तो तू मेरे से पूछा पिताजी आज खाने में क्या बनाएंगे। शाम को 4 बजे 5 बजे पूछा, दोपहर को तो 12-1 बजे खिला दिया, लेकिन शाम को खिलाना नहीं चाहता। तो आपने बेटा से कहा, तू पूछना कि शाम को क्या बनेगा। बेटा जाके कहा, जब उसके मित्र के बगल में बैठे थे, तो बेटा जाके कहा, पिताजी हाँ बेटा, आज शाम को भोजन में आप क्या पाओगे, आप शाम को भोजन करोगे? पिताजी ने पूछा। तो पिताजी ने कहा, भोजन और शाम को? अरे सूर्य अस्त हो जाने के बाद जो भोजन है ना, राक्षस भोजन होते हैं। कितना खाए हम, राक्षस थोड़ी है। दोपहर को इतना सारा खाया, फिर शाम को 4 घंटे बाद फिर खाएंगे, क्या हम राक्षस तरह को लगते हैं? वैसे तो हमारे मेहमान से पूछ लिए खाएगा कि नहीं, इनसे पूछिए। ये तो सोचा ये भगवान, अब कौन बोलेगा कि मैं खाऊं, मैं खाऊंगा। ये सोचा कि नहीं हम नहीं खाएंगे भाई, हमारा पेट भरा हुआ है। सोचा कि ये तो पहले ही बोल दिया, जो खाया राक्षस भोजन है, सूर्यास्त के बाद है, और अभी खाया इतना फिर खाऊंगा, तो मैं कैसे बोलूं? ये खुद ही मना कर रहे हैं आपके लिए, मैं कैसे बोलूं? तो उसने कहा नहीं, मेरा पेट बहुत भरा है और हम नहीं खाएंगे, हमारा पेट भरा हुआ है। तो मेहमान के साथ ऐसे करने से अपमान होगा, इसलिए उल्टा क्या बोलना चाहिए? बोले भाई हाँ क्यों नहीं खाएंगे, बढ़िया चीज बनाओ, दोपहर को जो नहीं बनाया शाम को अलग अलग आइटम बनाओ, बढ़िया है। अरे मित्र के साथ बैठ के खाने का मजा ही अलग है, तो मित्र खुश हो जाएगा। तो ये ऐसा लगता है कि खुद को खाने के लिए, बनाने के लिए बोल रहे, लेकिन खुद खाने के लिए नहीं बोल रहा है, अपने मित्र के लिए ही बोल रहे हैं। ऐसे गोपी कह रहा, हमारे हृदय में अपना चरण रखो, हमारा काम शांत हो जाएगा। ऐसा लग रहा है गोपियों का सशुभ वसन है, लेकिन नहीं, कृष्ण का ही सशुभ वसन है। गोपी चाहती हैं कि ये गोपी केवल तुम्हारे लिए, जत्ते सुजात चरणों गुरुहम स्तनेषु, आपका चरण हमारे हृदय में रखो, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे को देख करके खुश हो जाओ। गोपियां साजती हैं तो भगवान की खुशी के लिए, गोपियां खाती हैं तो भगवान की खुशी के लिए, आपने कोई सशुभ वासना की। तो इसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद के अंदर गोपी गीत है, रास पंचाध्यायी में पंचप्राण बताया। तो गोपी के 7 श्लोक हमने 7 दिन में इसका व्याख्यान किया है। ठाकुर जी की कृपा होगी तो फिर आगे जो श्लोक है, इसमें तो 19 श्लोक है, बाकी श्लोक जब ठाकुर जी की कृपा होगी, गुरु महाराज की कृपा होगी, सुनाएंगे। तो आप सभी लोग बड़े ही आभारी के पात्र हैं। 7 दिन तक आकर के ये गोपी गीत का श्रवण किया। हमने साधु गुरु वैष्णव की कृपा से और गुरु महाराज जी की कृपा से जो भी श्रवण किया और अध्ययन किया, उसको थोड़ा सा कीर्तन गाने में हम प्रयास किया। तो 7 दिन के बीच में हमारे बोलने में जो त्रुटि है या सिद्धांत में कुछ भूल त्रुटि हुई है, आप सब लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि हम तो बालक है, सीख रहे हैं। ये तो भगवान की कथा परफेक्ट बोलना बहुत मुश्किल है। बात का पित्त इनसे शरीर भरा होता है, इसको कोई वर्णन करने में समर्थ नहीं होता है। ठाकुर जी की कृपा जिसके ऊपर जितनी होती है उतना ही बोलते हैं। जैसे मक्खी भी उड़ती है और एक चील भी उड़ती है,
लेकिन दोनों के उड़ने में बहुत अंतर होता है। ऐसे कृपा जिसके पंख में जितना शक्ति होती है वो उतना दूर उड़ता है। ऐसे गुरु वैष्णव की कृपा जिस साधक के ऊपर जितना होते हैं वो उतना ही हरि कथा बोल पाते हैं। तो आप सभी लोगों का बड़े ही आभारी है, धन्यवाद है। आप लोगों ने हमें मौका दिया और सुने, और ठाकुर जी की कृपा है, राधा गोविंद देव और चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, और हमारे यहाँ जो परम पूज्य भक्ति भक्ति वेदांत परम देव महाराज है, इनकी कृपा से यहाँ मिला। और हमारे ये परमानंद प्रभु जी हैं, बड़े प्रेमी भक्त हैं, सेवा में हम देखते हैं रोज इतनी सेवा करते हैं, मंदिर सफाई करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई भगवान की सेवा करते हैं तो मन गदगद हो जाता है। गुरु महाराज जी किसको ज्यादा प्यार करते थे? जो मंदिर में सेवा करता है, हरिनाम करते हैं, कथा कीर्तन में अटेंड करता है, वही गुरु जी का प्यार है, और बाकी कोई नहीं है। तो प्रभु जी की सेवा है, सारे भक्तों की सेवा वृत्ति है। और हमारे अखिलेश प्रभु 7 दिन तक हमारे वाणी मान करके, हमारा कान मान करके उन्होंने श्रवण किया, और उन्होंने गुरु जी की कृपा प्राप्त ऐसे किया है, ऐसे आप लोगों को ट्रांसलेट करके सुनाया है। तो इनके लिए बहुत बड़ी आभारी है, कृपा है, सभी भक्त जनों की कृपा है। ऐसे आप लोग कृपा करते रहो, और इसी प्रकार हम ठाकुर जी की ये कथा कीर्तन करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अभी इसके बाद आरती होगी, आज लास्ट दिन है, आरती करके और फिर इसके बाद हम लोग प्रसाद करके जाएंगे। So the gopis are saying that we are very indebted to you, that yes, you have diagnosed the disease, and we will remain indebted to you the entire life, because you have given us a very big price. Because now they are describing, I spoke in the Rajna Prabhu saying that in the beginning I said, starting the shloka, that there are 4 qualities of Krishna's feet that are described here in this shloka. So first and second we have discussed. The first being that it attracts or extracts all the sinful reactions of anybody who has come to surrender at his lotus feet. And so this is the quality of his lotus feet, that it attracts all the sinful reactions, etc. And the second is that with these feet he is grazing in the forest, and he is chasing the cows, etc. And these are very soft, very beautiful feet of his. With these feet he should have put it on our chest, but with these feet he is grazing the cow, using these to graze the cow. Now he is describing the third one. Third one is describing is Shri Niketanam. Shri Niketanam, Shri here is referring to Lakshmi. Niketanam means he is giving abode or shelter to Lakshmi. Lord Narayan, he has all the time, he is being served by Lakshmi, and Lakshmi resides at his lotus feet 24/7. She is always there. She is serving him day in, day out. She is serving his lotus feet. So the gopis are saying, if you have given shelter to Lakshmi ji, what is our fault? Why can't you? You have given him 24. You have given her 24/7 seva. You are always. So she is always having this good fortune of associating with you. So why can't we have this good fortune of also attaining your lotus feet? So, and the fourth, he's saying, I'm speaking in brief because the subject matter is very vast, but we have to discuss so many other things also. So I'm trying to hurry up. Then he's saying, all right, whatever has happened up till now, we understand that these feet of yours, they are grazing the cows, they are giving shelter to Lakshmi. You have given these lotus feet to Lakshmi ji, and you are extracting whoever comes at your lotus feet, you take away their sinful reaction. Up till now, here, seems to be still some logic, seems to be some sense seems to be there in this activity, in these activities of yours. But the fourth activity, they are describing that this is totally ridiculous. This activity of yours, that what are you doing? These lotus feet, with these lotus feet, you are dancing on the hooks of Kali? What kind of sense is this? What kind of logic is this? He is the poisonous of the serpents. These lotus feet are served by Lakshmi ji. These lotus feet are served by so many exalted, saintly persons. And with these very lotus feet, you are dancing on the hooks of Kali. He said, we could tolerate all this up till now what you have done, but this seems to be totally ridiculous. That you are dancing with these very lotus feet, which the Lakshmi ji is hankering, which the gopis, we are hankering, and so many other saintly persons are hankering. And even Lakshmi ji, she also actually, she had the association of Lord Narayan's lotus feet.
But when she developed this desire that she wants to have association of Sri Krishna's lotus feet, or when she developed this desire that she wants to serve Krishna's lotus feet, that then what happened? You sent her in Belvan, and for yugas and yugas she is worshipping you there, she is performing austerities, that maybe sometime I will get a chance, then I will be able to serve Krishna's lotus feet. So Lakshmi ji, you did not give this chance to Lakshmi to serve your lotus feet, and with these very feet you are dancing on the hooks of Kali, the poisonous serpent. He's saying, the Gopis are saying, this is totally ridiculous, totally ununderstandable by us. What is this ridiculous behavior of yours? And even the Nagpatnis, the wives of the serpent Kaliya, they are saying that this seems to us to be so difficult to comprehend, so difficult to understand, that this, what is a serpent? Serpent, anybody sees serpent anywhere, immediately nobody has affection for a serpent. Nobody has nobody takes serpent's respect. The moment they see a serpent, they kill it. This is the situation of a serpent in this material world. And on this serpent, what we have done, you have danced with your lotus feet, which are desirable by the entire universe. There are so many saintly persons who are trying to get a glimpse of your lotus feet in their meditation. For thousands and thousands of years, they are performing austerities, they are performing the devotional activities, that maybe we will get the glimpse of that Lord's lotus feet, and when they get a glimpse of your lotus feet for a fraction of a second, they feel their life successful. And those very lotus feet, you are dancing on the Nagpatnis are saying, these serpent's wives, they are saying, and with these very lotus feet, you are dancing on the hoods of our husband. He's saying, and when he was dancing, although from a distance it looked like dancing, but if you would ask the Kaliya serpent, he felt like that every time that he would change his step from one foot to the other, it felt like as if a huge hammer has been hit on his head. And after dancing for some time means being hit by this hammer again and again and again, Rakt, the blood began to come out from his different mouths. He has many mouths, many hooks. He began to bleed from all the mouths. So, and then he became Virakt. So try to understand this. This is Sanskrit here, but I will try to translate this to you. Rakt means blood, and Rakt can also means attachment. So then he became Virakt. Virakt means detached. So when you chastise him, then he became Virakt, or he became renounced. And then after he became renounced, that was not sufficient. Then he became Anuragi. Then he became Anurakt. Then he became Anurakt. Anurakt means he became attached to your lotus feet. So this was the effect of your dancing on this Kaliya. Rakta, Virakta, Anurakta. Dinesh Abdullah Smile a little. He's saying this is wonderful. Nobody seems to be giving any reaction. I think you haven't explained all the three. I said, no, I explained. See, they're smiling. No, बोलने मतलब शब्दों का जो ये है. हिंदी में बोलना अलग बात है, अंग्रेजी में बोलना. Got it? Rakt, Virakt, and Anurakt. 3 stages. Rakt literally can mean translation. Literal translation of the word Rakt means blood. He began to bleed. And when he began to bleed, Rakt can also mean blood, Rakt can also mean attachment. So after Rakt, Virakt means when you add this suffix V on any word, means from, without this. It means without. So means he became without attachment. And after becoming without attachment, he became Anurakt. Anurakt means now attached to Krishna. So this is what the Kaliya's wives, they said this. And then it is said that, and Krishna is saying that, oh, you are asking me that please put these lotus feet on my chest, on our chests. So if I put these on your chest, what will happen? The Gopis are saying that, oh, the moment you put these feet on our chest, that very moment, the separation, the fire of separation that we are burning so long, and this separation, this fire will be immediately, it will be doused. You will find this nectar emanating from your lotus feet, and will immediately feel bliss. Will immediately feel bliss. Now Krishna says, looks like it is for Swaswat. That this desire is for Swaswat. Means it is desire for your happiness. It looks like this, but there is a big. Try to understand that how deep are Gopis' prayers, what they are doing. He's describing that how this is not correct. That they are praying for their benefit. They are praying for their sukh. No, when they are praying to Krishna to put his lotus feet on their chest, that also is actually they wanting to fulfill the desire of Krishna. How? He's saying, now, suppose
Now suppose he's saying that there is somebody comes in your home. Suppose somebody comes in your home as he's your friend, and then he comes to your home, and you are when he comes to your home, you are all day, you are busy. You're busy. You want to cook for him something's very nice. You're cooking for him, and you go to the market, or you send somebody to buy something that I want to cook paneer for him. I want to cook this. I want to cook that. You arrange so many. Oh, my friend has come after such a long time. I want to cook a nice meal for him. So you are making all these arrangements. Then what will this friend say when he sees you running around busy in performing so many activities? The friend will say that, oh, why are you getting absorbed in all these? Why are you so busy in all this? There is no need. Just whatever is there, I will eat. There is no need. I'm not so hungry. But what is this friend saying? To whose home he has come? The friend says to him that, no. I'm very hungry actually. And we haven't eaten breakfast properly in the morning. I want to have a nice meal. And now it is an opportunity. You have come, so we'll share the meal together. He's not saying, suppose he will say that, oh, actually, yes, I'm very busy. And I have to run through so much. I have to go to this market and that market. And it is taking me a lot of time. Yeah, maybe we will take it easy. Then what will the friend feel? Even if you serve him, then you will feel guilty eating this. So no, the friend says, this friend whose home he has gone to, he's saying that actually we are very hungry. I'm very hungry and I want to eat. It's very good. You will eat nicely. Now another situation is that this guest came to his friend's home, and the friend has served him very nicely in the morning. They made very nice, beautiful arrangements and all. They have made very beautiful meals. They have served him very nicely. At 1:30 they eat their lunch, they finish their lunch, and then he doesn't want to cook in the evening again. They think that we cannot cook in the evening again, we don't have the facilities and don't have the situation, and we cannot cook in the evening. Then he says, what should I do? Then what he says to his son, when I'm sitting with the guest, that time you come in and you ask me, what will you eat in the evening? Just after I finish my lunch, after half an hour or something, come in and ask me what you have eaten. Yeah? Then his son says, okay. Then the son comes, he's sitting, his guest and the friend are sitting together, and now the son comes in and he asks his father, oh father, what will you eat in the lunch? He said, what? You eat in the lunch? Eat in the dinner? I had so much to eat. After when the sun sets, whatever food you eat, which is known as food of the Rakshasas, it is food of the cannibals. No. This is totally impure. We should not eat this. I don't want to eat. You ask the guest what he wants to eat. Now what the friend will say, what the guest will say. He's saying, what do you want to eat? He said, no. The friend also thinking that, no. It's okay. He's already said that I cannot cook. And this is the food of the Rakshasas and all. He said, no, I'm also quite full. Actually, I ate very nicely in the morning. I don't want to eat. No. If the friend is genuinely, he wants to serve, then instead of saying that, oh, I want to feed you, if you say that I want to make nice food for you, and I will cook such food for you that you have never eaten. I'll cook such, if you boast like this, then the friend will have no appetite. But what this friend will say, he's saying, when the son comes in, he says, what will you have? He says, I ate something in the morning, but I want that you should cook something different in the evening. I haven't had this and this dish. He mentioned some very nice dishes. He said, I haven't had this dish for very long. Can you cook this in the evening? He's saying, we will cook very nicely, cook totally different dishes and all, and I want to eat at this time, and we will eat in the evening. Okay? He doesn't even ask his friend, and he's cooking the best, and he's saying, I'm very hungry, I want to eat. I haven't eaten for so many days. It's very nice that I'm staying in the home after so many, I have this situation. I'm going to stay in the home. What he's saying, he's pointing to himself. He's saying, I'm very hungry. He's saying, I want to eat it. Similarly, the gopis, they are saying what they are saying. They are saying, we want that you should put your lotus feet on our chest, and then we will be satisfied. Actually, by saying this, indirectly what they are saying, they know that Krishna's desire is to rest his lotus feet on their chests. This is his desire. Whenever they dress up, whenever they decorate themselves, they know when Krishna looks at their lotus feet, when he looks at their beautiful decorations, etc., Krishna becomes very happy. So indirectly by saying this, that, oh, we will become very happy, actually they are telling to, they are fulfilling the desire of Krishna. And this also, they are fulfilling the desire of Krishna. So we have had, for the last 7 days, today is the 7th day, we try to read Gopi Geet in brief, although there are 19 shlokas in Gopi Geet, but we had the opportunity of reading, studying little 7 shlokas of Gopi Geet. He's saying, I'm just a child and I'm very ignorant. This Harikatha is like the vast sky. Mosquito also flies in the sky,
And eagle also flies in the sky. Whatever capacity a person has, this Harikatha is like the sky, it is unlimited. Whatever capacity somebody has, he performs, he can fly in that Harikatha in similar manner with that strength. He's saying, I'm just a child, I may have committed some offense to somebody. Whatever I try to speak, maybe there might be some mistakes by philosophical mistakes or some other mistakes. You all are very nice devotees and all, you are very senior devotees, you will forgive my mistakes and all. And he's saying, I'm staying here, it was so nice coming to you, I'm indebted to all of those devotees who came here, came to listen to this. He's saying, I'm also very indebted to Paramahansa Maharaj. He has arranged such beautiful arrangements and all. We were able to speak this Harikatha in the association of Radha Govindi, Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath Dev. We were having this opportunity to listen to this Harikatha. And also, of course, Param Prabhu, he's serving in so many different ways. He's saying, Gurudev was most pleased by that person always who used to serve in the temple. And I'm always saying Param Prabhu is serving in so many ways. He's saying, I'm very glad that I'm 100% sure that Gurudev will be very pleased with it. So with this, we will rest our Harikatha. And if we'll get another chance, then we will again discuss some further shloka. When we get a chance. Hare Krishna. And thank you for your Lord. I hope people are driving from Southport to Woomba. If you're not, I think we've been asking for one night. So he's also saying that today, because it's the last day of our speaking, we'll perform Arati. And after Arati, all of us will partake in Prasad. So I request all of you to stay in Arati and Prasad. There you go. Jayati Dedikam Janamana Braja Sayaprahi Swatradatrahi Daita Vishwata Disuta Sota Sayedita Savam Swam Vichinate Tavakatanitam Tapta Jivanam श्री राधे जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया बाले श्री राधे जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया बाले श्री राधे जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया Gopal Muraliya Bale, Gopal Muraliya
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये हमारे कांतारे मुखी कांतारे पंचम वेद किराला नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन तोड़े पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन तोड़े पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बाल सत पंत कर तन्मय गति खाने वाला बिजली को बनाने वाला। ये मधुर बाल सत पंत कर तन्मय गति खाने वाला बिजली को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप से है तारती। ओ जय जय राधा विष्णु बाला लीला आरती गाया हे ललिता विष्णुला। हे मदन मान रूप प्रियम सुता पीताम्बर सिंह कुच पुरम ललिता माधव श्री राधा गोविंद देव जी की जय, सचिनंदन गौधरी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, मायापुर धाम की जय, नीलाचल धाम की जय, अनंत वैष्णव वृंद की
जय, श्री भागवत भगवान की जय, जय श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव महाराज की जय, शिला भक्ति वेदांत शिला भगवान गोस्वामी गुरु महाराज की जय, भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय, भक्ति विज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज की जय, नित्य वैष्णव भक्ति वेदांत गौर गोविंद महाराज की जय, नित्य लाभेश्वर स्वामी महाराज की जय, शिला गौर किशोर दास जी महाराज की जय, सच्चिदानंद भक्त ठाकुर की जय, वैष्णव सांसद जगन्नाथ दास जी महाराज की जय, अनंत बड़ी वैष्णव की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जगन्नाथ बलदेश्वर राज की जय, नरसिंह भगवान देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, सब संतन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, कथा में आए हुए सारे भक्त वृंद की जय, जय परम पूज्य पापी करनी श्री भक्तिवेदांत परम दीप महाराज की जय, जय अनंत बड़ी वैष्णव वृंद की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। पूज्यपाद भक्ति श्रेष्ठ राधे श्याम प्रभु जी की जय, श्री गोपी गीत की जय, assembled devotees की जय, उलंबा यात्रा की जय। प्रभु जी कोटि कोटि लाख धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर हरे कथा जी। Thank you. Please come again. Speak some. I just want to say thank you, Prabhu, for coming. You've given a very beautiful katha, very special thing. We share and come together and everyone's got a chance to. सभी भक्तों के यहाँ बुला रही फटकी, सभी भक्त इधर आ जाओ, सभी लोग। He's calling it over. Let's have a photo. Group photo on Facebook. Smartphone. फोटो खींच ले। And smartphone. लोग बैठ जाओ, लोग खड़े हो।